maths exam to be held on 5th of May. आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन का एक नया तरीका कि 4-5 डेज जो हमारे पास बचे हैं उसमें हम बहुत अच्छे से हर टॉपिक का रिवीजन कर लें। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है हमने कि हर दिन हम 10 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे और 4 दिन में हम आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट करा देंगे। तो आज ये पहला लेक्चर जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट शुरू से हम रिवाइज करेंगे और लास्ट में हम हर एक के एक छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे जो भी सिलेबस में आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, जो भी हमको सीबीएसई के बोर्ड ने हमको सिलेबस दिया है सिर्फ हम उसके ऊपर स्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सबको पता है ax² + bx + c = 0 is a quadratic equation where ax² is a quadratic term, bx means a linear term and c means constant term. अब constant कौन हो सकता है? 2, 3, 4, 5, a² - b² a², कुछ भी हो सकता है, equals to 0 because it is a quadratic equation. सिलेबस में हमारे पास क्या है? सबसे पहले सिलेबस में हमारे पास होता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म। सो रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² + bx + c = 0 वेयर a नेवर इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे पास x² की टर्म खत्म हो गई, और जब x² की टर्म खत्म हो गई इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, वो हो गया सिर्फ लीनियर। इट मीन्स a नेवर इक्वल्स टू 0। इस पर बहुत ध्यान देना है। बहुत सारी बार हमारे पास आंसर आता है जिसमें a = 0 हो जाता है, तो उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये तो हुई पहली कॉमन मिस्टेक की बात। दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे आंसर्स निकालते हैं या रूट्स निकालते हैं। बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। bx वाली टर्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उससे हमको क्या मिलते हैं? फैक्टर्स। और उन फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं 0 से तो हमको मिलते हैं रूट्स या आंसर्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तीसरा पॉइंट आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना, और फॉर्मूला सबको याद है x = -b ± -b² - 4ac होल / 2a। अब इसमें कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं? पूरी लाइन के नीचे 2a नहीं लिखते हैं, सेपरेट एक अलग से 2a लिख देते हैं, वो पूरा फॉर्मूला ही रॉन्ग हो जाता है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को गलत निकाल लेते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या है? b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमको अलग से निकाल करके फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमारे सिलेबस का हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स का मीनिंग है रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या रियल और इक्वल है। हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होगा d > 0, और इक्वल रूट्स का मीनिंग होगा d = 0। इक्वल से इक्वल मिला लीजिए, और ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। तीसरा पॉइंट आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी वाली? जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, मगर वो जो बुक्स में दी हुई हैं रिड्यूसेबल, बहुत टफ कैटेगरी की, वो इस साल आपके कोर्स में नहीं है। तो हम 5 तरह की क्वेश्चंस करेंगे, 5 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और उससे आपका 1 घंटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर फुली रिवाइज हो जाएगा। तो मेरे साथ हैं, चलने को तैयार? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक का रिवीजन एक टाइप के क्वेश्चन से। फर्स्ट टाइप हम लेते हैं फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म। तो हम आते हैं अपने बोर्ड पर। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक टर्म हो गई ax², लीनियर टर्म हो गई bx, और कांस्टेंट हो गया c। कंपेयर करेंगे हम 0 से बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नेवर इक्वल्स टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। करेक्ट। अब आता है फर्स्ट टाइप, फैक्टराइजेशन से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाय द वे क्वेश्चन इज x² - 13x + 30 = 0।
अब बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसका मतलब -13 के हमको दो पार्ट्स करने हैं सच दैट द प्रोडक्ट विल बी 30 and sum will be -13. So starting from here, x square minus 10x minus 3x plus 30 equals to 0. See, -10 and -3 -13 and their product -10 and -3 plus 13. What is common in first two? X minus 10 minus 3 common, x minus 10 equals to 0. So first common factor x minus 10 and second common factor x minus 3. Compare with 0. The product of two factors equals to 0. It means either first one is 0 or second one is 0. So if first one is 0, then answer is 10, and if second one with compare 0, answer x equal to 3. These are said to be roots. Simple words में हम क्या बोलते हैं? Answers. मगर actually x equals to 10 and x equal to 3 are the two roots of this quadratic equation. If you want to check, you can check your answers by substituting x equals to 10 here. 10 square minus 13 into 10 plus 30, you will get 0. Similarly, if you put x equals to 3 here, 339 minus 13 into 3, 39 and plus 30 equal to 0. Hence, your answer is 100% correct. Yes, so total answer equals to 0. It means both the roots are perfectly correct. So first we'll start the revision of questions based on factorization. Find the roots of quadratic equation by factorization method. सबसे पहला topic factorization. So first 2x square minus 5x plus 3. एक एक क्वेश्चन मैं करता रहूँगा और आप चैट बॉक्स में उनके आंसर्स लिखते रहेंगे। जिनको आता है आगे चलेंगे, वरना मेरे साथ मेरे करने के बाद आप आंसर्स करते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन 2x square minus 5x plus 3, you have to solve by factorization. Solve by factorization. So first 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. See what the product is needed. 2 into 3, 6, and here it is minus 5 as a sum. So here we write product needed 6 and sum needed minus 5. Sometimes you may write 6x square and product minus 5x, the same thing. So here we will start 2, 3, 6, 2x square minus 3x minus 2x plus 3 equal to 0. See, minus 3 and minus 2 minus 5 and minus 3 into minus 2 product 6. So now we'll take common. X is common. Here it is 2x minus 3 minus 1 common, 2x minus 3. Nothing is common, it means 1 is common. So again 2x minus 3 and x minus 1. So what is the answer? When you compare with 0, the first factor 3 by 2 and second factor x equals to 1. These are the two separate roots or the answer. इन्हीं को हम क्या बोलेंगे आगे जा करके? Distinct real roots. Distinct real roots, दो different answers. इनको हम बोलेंगे two distinct roots. अब हम आते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2. How we solve this sum? This sum is for you. जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे और चैट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2. First check whether it is in the standard form. x square सबसे पहले आना चाहिए, फिर x आना चाहिए और फिर constant होना चाहिए. So yes, it is in the correct form. Now what product is needed? 5 root 2 into root 2, that is 10. So write down product needed 10. Sum needed 7. Product हमको चाहिए 10, sum हमको चाहिए 7. बताइए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या दो फैक्टर्स होंगे और इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करें. यहाँ पे आंसर चेक करते जाएं. रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2. सो फर्स्ट प्रोडक्ट 5 रूट 2 into root 2 10 and sum needed 7. Very simple factors, 5 into 2. So here we write root 2x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2. Correct?
नाउ √2 एंड हेयर 2x. सिंपल मेथड इज, बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन लेना नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ उनको शॉर्टकट. टेक 2 मीन्स √2 इंटू √2. 2 को हमने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2, x एज इट इज. यहाँ पर तो कॉमन इजीली आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5√2 एंड 5x. Important point is here, how we write to √2. Why? Because √2 is here. Now it's very simple. You can take the common √2x. Inside it will be x, and √2x is out, so only √2 is the first common. Now 5 is common, so here again x plus √2 equal to 0. Again x plus √2, common factor, and √2x plus 5. Now you know when the product of two factors 0, it means either this one is 0 or this one is 0. So first answer x equals to minus √2 and second answer x equals to minus 5 by √2. Very good. बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर लिखा है और सही आंसर लिखा है. वेरी नाइस. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं. Whenever roots are there, it means they feel, oh, it's very tough. No, it's not tough. You have to first arrange, and then take the product. What product is needed? 10. What sum is needed? 7. Then simple splitting middle term. फिर turning point आता है here. How we take common √2 and 2. So very simple. Factors of 2 means √2 into √2. 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं. हमने इसको √2 में कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गई. डोंट वरी, बट यू विल गेट द करेक्ट आंसर. So x equals to minus √2 and x equals to minus 5 by √2 are the two roots. Next sum again for you. जिन्होंने कॉपी कर लिया है आगे बढ़ते जाएं, जिन्होंने आंसर लिख लिए हैं वो चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाएं, ताकि हम भी चेक करते रहेंगे कि कितने बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट, इज टोटली फॉर यू. C part and D part for you. Just take a practice. C part and D part. Product 6 चाहिए, sum -2 √6 चाहिए. You know the factors of 6, √6 and √6. So simply write minus √6x and minus √6x. minus 2 √6 के दो फैक्टर्स क्या लिखेंगे, minus √6x and minus √6x. अब √6 का मीनिंग होता है √3 इंटू √2, और आगे वाले 3 का मीनिंग होता है √3 इंटू √3. So this 3 we can write as √3. √6 we can write as √3 into √2. 2 we can write as √2 into √2, and you will get the common factors easily. Yes, correct? Next you can start the D part. D part where we need the product as 18 and sum as 11. 6 into 3 √3 you will get 18, sum 11. Very simple factors, 9 and 2. Take the common and get the result. So this is the first type in the syllabus of quadratic equation, how to solve the quadratic equation using factorization method. Now we come to the second point. What is the second point? Second point based on quadratic formula. So what is quadratic formula? Suppose the equation is the same, ax square plus bx plus c equal to 0. Formula, Sridharacharya formula, minus b plus minus under root
b square minus 4ac whole divided by 2a. The common mistake is here that student may write minus b separate and plus minus b square minus 4ac divided by 2a. No, this 2a is complete division of this whole numerator, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac. तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका हमको डिवीजन जो है पूरे को डिवीजन बाय 2a, where discriminant is b square minus 4ac. b square minus 4ac को हम बोलेंगे discriminant, and everything depends upon discriminant. What type of roots depends upon b square minus 4ac. So if b square minus 4ac greater than 0, we have real and distinct roots, two different roots. Real तो हो गई but distinct roots. And if b square minus 4ac equal to 0, तो real तो हो गई but equal roots. So remember, for the third type questions, second type questions based on formula and third type question based on nature of roots. If b square minus 4ac greater than 0, you have real distinct roots, and if b square minus 4ac equal to 0, real and equal roots. So first we solve questions based on formula, how to apply the formula and get the answers. So here the questions for you. First part, you have to write the coefficients. So here the question is 2 root 2 x square plus root 15 x plus root 2 equal to 0. So first we'll take what is a. एग्जाम में करने का तरीका, x equals to a equals to 2 root 2, b equals to root 15 and c equals to root 2. Now you know the value of a, b and c. So initially you have to calculate b square minus 4ac, that is value of discriminant. So simply substitute what is b, root 15, b square minus 4 a and c. हमेशा सबसे पहले अपन निकालेंगे value of discriminant, that is d. So root 15 into root 15, that is 15, minus 4 into 2 into 2. Why? Because root 2 into root 2 again 2. So answer of D is 15 minus 4 to 8 to 16. What we are getting? Minus 1. So if D equals to minus 1, it means no real roots, and you have to stop here without solving the question. You have to write no, we don't want to solve it. Why? Because D comes as minus 1, and minus 1 D means no real roots possible. You have to stop it. Okay. So second question, again, to calculate the value of D, 4x square plus 4 root 3 plus 3. Question is using formula. First we write A, 4, B, 4 root 3 and C, 3. Now we calculate the value of D, that is B square minus 4AC. So B square minus 4AC. What we'll get? 4, 4, 16. 16 into 3, 48. Minus 4, 4, 16. 16 into 3, 48. That is 0. Now what we have completed, when D equals to 0, it means roots are real and equal. So here we can write roots are real and equal. When roots are real and equal, we can write the answer as x equals to minus b plus minus 0 divided by 2a. Now tell me what will be the answer? Minus 4 root 3 divided by 4 into 2. 4 and 4 cancel out. Answer is minus root 3 by 2. Answer is minus root 3 by 2. Since equal roots, you may write 2 times. Minus root 3 by 2 and minus root 3 by 2. बुक में आपके दिया हुआ है completing the square method, but completing the square method is not in the syllabus for this year 21-22. So avoid that one. You have to solve only by the factorization method or by
यूजिंग फॉर्मूला। तो बुक में जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे? बाय फॉर्मूला ओनली। नाउ 2 questions for you. Solve these 2 sums and write your answer in the chat box, part C and part D, using formula only. Solve this C part and D part. And write your answer in the chat box. Or simply copy it and then you can solve later on. So these 2 C and D for your homework. Now we come to the type 3rd question. What is the type 3rd question? After completing A and B, you have to solve C and D yourself as in homework. Now the type 3rd. Type 3rd question very important, based on nature of roots. Very important. Nature of roots means you have to calculate the value of D, and then if D greater than 0, you may write roots are real and distinct, and if D is equals to 0, you may write roots are real and equal. So here the first thing. Find the value of K for which the quadratic equation has real and equal roots. So real and equal roots means D equal to 0. And what is D? B square minus 4AC equal to 0. So starting with the first part, B. B means minus 2, 1 plus 3K. This is B square. Minus 4, A, 1, and C, 21, 14K. B square minus 4AC must be 0 for real roots. Now simplify. Minus 2 square is 4. 1 plus 3K whole square. 1 plus 6K plus 9K square. Minus 4 in 4, 4 to 8, and 56K equals to 0. Expand again. 4 plus 24K plus 36K square minus 84 minus 56K equals to 0. Simple. Now collect again quadratic equation. 36K square, 24K and 56K, that is minus 642 and 523K. 84 and 4 only 80 equals to 0. For the value of K, we have to solve again a quadratic equation. And if something is common, we'll take common first. So 4 is common, 9K square, 8K, 20 equal to 0. Now you have to solve this quadratic equation. Again, we want product as 9 into 20, that is minus 180. Product needed minus 180, and sum we want as minus 8. So very simple. 9K square minus 18 and 10. So 18K, 10K, and minus 20 equal to 0. What we are getting from first two and last two, take common. 9K common, K minus 2, plus 10 common, K minus 2. What we'll get? K minus 2 and 9K plus 10. So answer of K is 2, or K is minus 10 by 9. For the value of K, we have two options. First is K equals to 2, and second K equals to minus 10 by 9. So these type of questions are very important. When the question says find the value of K when
we need real and equal roots. Correct? So one question for you, solve here. And why this question is important, I'll tell you. This 3k plus 1 x square plus 11 plus k into x and 9. What is A? A is 3k plus 1. B is 11 plus k and C is 9. We have to solve and get the answer of k same as this previous question, but very cautious at this point. When your answer comes k equals to minus 1 by 3, you have to avoid. Why? Because if k answer comes minus 1 by 3 and if you write k minus 1 by 3 here, this becomes 0. But the initial important point of the quadratic equation is the a coefficient of x square never equals to 0. तो यहाँ सारे बच्चे गलती करते हैं. क्या k अगर माइनस 1/3 आया तो उसको आंसर एक्सेप्ट नहीं करना है. रिजेक्ट दैट आंसर बिकॉज k minus 1/3 is not accepted here. So note down, this is a turning point of this second part. Now solve third part for equal roots. A equals to 1. B is not here because B is fixed with 2k. Coefficient of x is said to be, yes, B. So you have to arrange this equation first. And how we arrange? So listen, x square plus 2kx plus 12 and 4k. This is the proper form. So what is A? A is 1, B is 2k, and C is complete 12 plus 4k. So don't confuse that this 2x plus 4 will be B. No, is not in the standard form. You have to make it first in standard form. And standard form means x square first, x second, and constant all in the third category. So this one is the coefficient of x square, this one is the coefficient of x, and now constant term. Now you know for the real and equal roots, b square minus 4ac 0. कर लेंगे कंप्लीट. तो ये दोनों क्वेश्चन भी रियल एंड इक्वल रूट्स के आपके होमवर्क के लिए. नेक्स्ट टाइप थर्ड, बट वी हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. How we solve for real and distinct roots? You know, real and distinct roots is possible when d greater than 0. And d greater than 0 means b square minus 4ac greater than 0. So in all these four parts, you have to first calculate d and then compare with greater than 0, and you will have the answer for unknown k. So we'll start with the first part. 2x square plus kx plus 3 equal to 0. First we'll calculate d, that is b square minus 4ac greater than 0. So k square minus 24 greater than 0, or k square greater than 24, or k greater than, so here we write k square minus, factorize, we can write root 24 greater than 0. This is one time plus and one time minus, very important. K plus root 24, k minus root 24 equals to, greater than, we want greater than 0. This is the turning point of this question. Sometimes student may write here answer up to this step, or they write k greater than root 24. No, you have to solve one more step extra on the number line. Suppose this is root 24 and this is minus root 24. Minus root 24 and root 24. Now how we check that this one is greater than 0? By the way, you will take any number less than minus 24.